एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो लीड कोड पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 2 वीक स्टडी प्लान टू टैकल डीएसए। हम ये वाला प्री डिफाइंड सिलेबस करने वाले हैं हमारे लीड कोड का। इसको करने के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत बेस्ट हो जाओगे, बट या बहुत सारे टॉपिक्स जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आप वो सारे इसके अंदर कवर कर लोगे। लाइक सी, यहाँ पे आपको दे रखे हैं ट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लिंक लिस्ट के हैं, स्टैक्स एंड क्यू हैं, एरे एंड स्ट्रिंग तो है ही। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 के साथ। या एंड ऑल्सो अगर आप ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हो अंडर द कंसिडर्ड टाइम, तो आपको एक बैच मिलेगा। ओके, सो इट्स ऑल्सो गुड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज contain duplicates. Okay, I want to open my Jamboard. Okay, so the question is pretty easy. So see, here we have a given integer numbers and we need to return true if any numbers is occurred twice in the array, else we return false. Okay, सो सिंपल है, हमें कोई भी नंबर अगर यहाँ पे एरे के अंदर दूसरी बार आ रहा है या तीसरी बार आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बारी आ रहा है, तो हमें उस केस में रिटर्न करना है ट्रू, एल्स फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप इनको सॉर्ट कर लो एंड पॉइंटर्स रख के आप इनको आइट्रेट करो। अगर कोई भी एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ मैच कर जाता है, यू नीड टू रिटर्न ट्रू, एल्स वी नीड टू रिटर्न फॉल्स इन the last. Okay, else you can also use hash set if you are aware about that. I gonna use both the approach in this question. So firstly I started with the sorting technique because अगर आप hash set आपने use नहीं किया है तो आप उसको cover नहीं कर पाओगे, but I give you the introduction about hash set too. Okay, so let me take a pen here. So yeah, so firstly I have a example that is 1231. Let's take it here, 1231. Okay, after sorting this array, this is an array, if I sort this array, it became 1 1 2 and 3. Now I just need to find another number that is occur twice in the array. Okay, only one number. So अगर मैं यहाँ पे I को अपने सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करूँ, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से वी नीड टू चेक फ्रॉम दिस। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करूँ, लेट्स सपोज आर आई इज हेयर, आई विल चेक विद द प्रीवियस इंडेक्स, क्योंकि हमारा सॉर्ट हो चुका है एरे। तो अगर हम पीछे वाले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। लाइक अगर वन हमारा इज प्रेटी ऑब्वियस कि अगर पीछे वाले से इक्वल है तो नी नीड टू रिटर्न द ट्रू, बिकॉज यहाँ पर डुप्लीकेसी हो गई है। सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता तो इन दैट केस वी हैव ज़ीरो हेयर, इट गोज forward. Now it will check with previous one, 2 will check with 1, not consider. Now I goes here, now 3 will check with 2, not consider, will come outside. Okay, now see, here we did not have any duplicacy, we simply return false in that case. Okay, and in the previous case we have to return true, because if I check with 1, it will return true. Okay, so it's pretty simple. Let's code it up. So let's see. So in Java we have a method that is arrays.sort that sort the array in the ascending order. Okay, so I sorted. Now I just need to iterate over the loop from 1th index to numbers dot length, that is the last element, and I just need to check if any time the numbers at I is going to be equal with numbers at I minus 1. I just need to return true in that case. Else अगर बाहर आके भी कहीं हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो अपने पीछे वाले नंबर के साथ इक्वल हो, just we need to return here false. Okay, now let's check it. Is it working correctly or not? Yeah, it passed the sample test case. Let's check for other ones. Yeah, it working. Now let's submit it. Yeah, it's really working. Okay, so now let's goes with the
हैशसेट टेक्निक, इफ़ आई कंसिडर अ हैशसेट, लाइक मैं अगर आपको बताऊं हैशसेट होता क्या है, सो फर्स्टली हैशसेट इज़ अ data structure that contain all the elements, or if you it will be integer or string or anything you want, any data type, okay. like अगर मैंने हैशसेट बनाया है, हैशसेट ऑफ इंटीजर बनाया है अगर मैंने, तो इसके अंदर सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी जो कि सिर्फ एक ही बार कंटेन करेगा। लाइक अगर हमने यहाँ पे वन हैश सेट में डाला, लेट्स सपोज इट इज एन हैश सेट, अगर मैंने वन डाला, नाउ टू कम्स हियर, आई पुश इट ऑन टू द हैश सेट or add into the hash set. Now 3 comes, we add into the hash set. Now 1 come, we'll check, is there 1? Yeah, is there 1? Okay, it contain 1, so we simply return true here. I found a duplicate for this 1. Okay, you can also use hash map for this same approach. Okay, so now let's code it up. And also the searching technique of this hash set is order of one, so we'll consider this one. Okay, so let's code it. So let me comment out it. Yeah, and in this case I just show you the time complexity of this approach. The time complexity is order of n log n, because our sorting method cover a time complexity of n log n, and our this loop takes order of n, that is eliminated by this because it is a higher time complexity than this. Okay, so that's why this approach have the time complexity of order of n log n and space complexity as order of 1. Okay, now let's check for Hessel technique. So if I declare a hashtag of type integer, okay, integer, sorry, okay, let's name it as a set. Now, new hashtag, I declare it and just need to iterate over the loop again. Okay, so yeah, yeah. Now, if our set dot contains method this numbers at I element, then we simply need to return true. This contain method return a boolean variable, so also you can do like that or also you can do like that also. Okay, so simply, if not, we simply add into the r has set, okay, to this current element, और अगर ये हमारे पूरे लूप में कहीं नहीं फंसता तो we simply return false in that case. Okay, now let's submit it. So the time complexity of this algorithm is like, yeah, it's submit successfully. So the time complexity of this approach is order of n, but the space complexity of this algorithm is order of n as well, because we take a hash set, and if we have a distinct values in our array, so hash set में हमारी सारी की सारी distinct values हो जाएंगी जो कि order of n होगी in worst case. Okay, so this is the question. So in next video I'm gonna explain you maximum sub array question. So let's continue with this. Thank you so much for watching. Bye bye.